Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to discuss types of vectors. Let us take the first type, zero vector. Zero vector को हम डिफाइन करेंगे a vector whose length or magnitude or modulus is zero is called a zero vector. Or we can say a vector whose initial and terminal points coincide is called a zero vector. Dear students, zero vector is also called a null vector. This vector is also called null vector. इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वेक्टर ई. इस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, so we can say this is a zero vector. Similarly, vector bb, these are zero vectors. Now let us take a second type, unit vector. Unit vector a unit vector is that vector whose length or magnitude is unity, or we can say a vector whose magnitude is unity, that is one, is called unit vector. The unit vector in the direction of a given vector E is denoted by E cap. इसको पढ़ते हैं हम 10. यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. Dear students, let us take third type, coinitial vectors. Coinitial vector. कोइंशियल वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे two or more vectors having the same initial point, are called coinitial vectors. यानी ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा उनको हम कोइनिशियल वेक्टर्स कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी एटसेट्रा और कोइनिशियल वेक्टर्स. डियर स्टूडेंट्स, इस वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ए है, इसमें ए है, इसमें ए है. आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी, वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स. देयरफॉर वी कैन से ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, दीज आर कोइनिशियल वेक्टर्स. नाउ लेट अस टेक
fourth type, that is called collinear vector. कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं. यानी टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी, यहां पर डेफिनेशन हम लिखेंगे टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी collinear or parallel if they are parallel to the same line, irrespective of their direction, of their magnitude and direction. Any two or more vectors are said to be collinear or parallel if they are parallel to the same line, irrespective of their magnitude and direction. Dear students, इसमें हम एक और टाइप पढ़ेंगे, कोप्लनर वेक्टर. कोप्लनर वेक्टर कोप्लनर वेक्टर उन वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करें, यानी वेक्टर्स आर सेड टू बी coplanar if they are parallel to the same plane or they lie in the same plane. यानी ऐसे वेक्टर्स which are parallel to the plane, or which lie in the same plane are called coplanar vectors. इसमें एक और टाइप हम पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर्स. Dear students, two vectors A and B are said to be equal vectors. Equal vectors if they have the same magnitude and direction. If they have the same magnitude and डायरेक्शन. ये रिटर्न एज यहाँ पर लिखेंगे हम A equal to B, यानी two vectors are equal if they have same magnitude as well as direction. प्यारे बच्चों, आज के लिए ये काफ़ी है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक खुदा हाफिज़.